हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर। ये मेरी यूट्यूब पे चैनल चल रही है जिसमें मेरी बहुत सारी वीडियोस है, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है। और पर्टिकुलरली मैं यूट्यूब में ये लास्ट ईयर 22 मार्च 2020 जब लॉकडाउन अपीयर हुआ, उसके बाद में मैंने देखा, मेरे अपने आसपास के सिटी वाले लोगों को और मेरी ऑनलाइन ट्यूशन्स जब भी चलने लगी तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स, पर्टिकुलर उनकी मदर्स, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है उनके अपने बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि वे इंग्लिश जानते नहीं है और सीखना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कहीं पर आना जाना लॉकडाउन है। तो पर्टिकुलरली मैं उन्हीं लोगों के लिए, उनको ही सपोर्ट कराने के लिए यूट्यूब पे मेरी अपनी चैनल स्टार्ट कर ली है, जिसमें मैंने इंग्लिश को बहुत आसान तरीके से किस तरह से सीखा जाता है इसकी बहुत सारी वीडियोस लगाई है। तो आप ज़रूर विज़िट करिए हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर। और इसके साथ में आप अपने आप को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, स्टूडेंट को पेपर किस तरह से लिखने चाहिए जबकि वे स्कूल नहीं जाते हैं और किसी की बोर्ड अपीयर एग्ज़ाम हो रही है, तो उनको किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप करना है। और ऐसी बहुत सारी अलग अलग वीडियोस के हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर चैनल में आपको मिल जाएगी। तो आप भी देखिए और सभी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिए, ऑल बटन पे क्लिक करिए, ताकि आपको अभी मेरी सब वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपने आप को एजुकेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग बना सकें। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। डिशेज, वानगियों, तो जानिए और याद रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अनकॉमन वर्ड, अथाणु, PICKLES, पिकल्स, उकाड़ो, DECOCT, डिकॉक्ट, બહુ ચાલે છે અત્યારે। આપણે છેલ્લા 1.5 વર્ષથી આખી દુનિયા, હોલ ધ વર્લ્ડ became so much unsafe with that pandemic corona, so all turn toward this decoct which are called उकाड़ो। ओके, तो इसको क्या कहते हैं ये समझिएगा। कचुम्बर, SALAD, सलाड। कटलेट, CUTLET, कटलेट। जनरली वी पीपल pronounce it कटलेसा, it is not that, it is कटलेट। ओके, mind it well। कढ़ी, CURRY, करी। काढ़ो, उकाड़ाનું હિન્દી નેમ કાઢો। ડિકોક્શન, DECOCTION, ડિકોક્શન। અને એ થોડું થિક લિક્વિડ હોય છે, એટલા માટે થિક લિક્વિડ કોઈ પણ હોય એને આપણે વી કેન સે સિરાપ, SYRUP, સિરાપ। પછી કોઈ પણ દવાના ડોસેજમાં આવતા હોય છે જે થિક લિક્વિડ હોય છે, જનરલી કફ સિરપ હોય કે બીજા કોઈ એનર્જેટિક સિરપ આવતા હોય છે, જેની સાથે જનરલી આયુર્વેદિક વધારે હોય છે, બટ નો ડાઉટ ઇટ ઇઝ એલોપેથી ઓલ્સો। આગે ખીચડી, HOTCHPOTCH, hodgepodge। Too much healthy food and too much instant digestive food to all the people, and so when some people feeling illness or sometimes they are feeling weakness also, people and doctors recommend them to eat hodgepodge। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट लाइकली एज वेल एज नॉट लाइकली फूड, खीचड़ी। कैक, CAKE, कैक। घट्ट बनावेलो टमेटानो अर्क, SAUCE, सॉस। चॉकलेट मिश्रित वानगी, नानी नानी मेलोडीज ने एवी कैडबरीज टाइपनी नानी नानी
ડેરી મિલ્ક એવી ચોકલેટ્સ આવે છે એને કહેવાય છે ટોફી. TOFFEE ટોફી. ચોકલેટ, we all are very much known with this word and love also to eat it. CHOCOLAT ચોકલેટ. પારદર્શક મીઠાઈ, જેલી. જેલીથી we all are, including kids, enough familiar but doesn't know the Gujarati name of jelly. So it is here. Pardarshak mithai, that is in sweet in taste, that's why it's called jelly. પાઉં, BREAD bread, એનું બીજું નામ છે BUN બન, અને એનું તળપદું નામ છે DOUBLE BREAD double bread. If our elder we have many time listen that type of word from their mouth that they are calling pav or bun to double bread. ફળ મિશ્રિત મિઠાઈ, that is dessert, DESSERT dessert. After a meal, nowadays people prefer this. Within the meal it is not served, but after meal it is now fashion to serve dessert. ફળ અને માખણની વાનગી, TART tart. ફળોના મિશ્રણનો ભૂક્કો અથવા તો લુગદી અથવા તો પેસ્ટ, જેને કહેવાય છે સ્ક્વોશ, SQUASH સ્ક્વોશ. બટાટાની કાતરી એટલે કે વેફર, WAFER વેફર. વી ઇનફ ફેમિલિયર વિથ ઓલ ધીઝ વર્ડ્સ. બ્રેડ અને કાચા શાકની વાનગી, વેજીટેબલ સેન્ડવિચ. Got it? VEGETABLE SANDWICH સેન્ડવિચ, વેજીટેબલ સેન્ડવિચ. માખણ મિશ્રિત મિઠાઈ, that is pastry. We can say pieces of big cake. It is also called pastry. PASTRY. But what it belongs? It belongs within that. In its making, butter is also used. Sweet, sugar and icing and all are used, and that's why it is called pastry. Which ingredients of that making is just a cake. Murabbo, JAM jam. Rab, too much healthy and for ill people, to get energized soon. Our Gujarati recipe, GRUEL gruel, PORRIDGE porridge. Many people said porridge to rab, but the real name of rab is gruel, rotli, daily menu of our Gujarati people. Okay, rotli, CHAPATTI ચપાટી. બાજરાનો રોટલો અથવા તો બ્રેડનો ટુકડો, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે LOAF લોફ. વાનગી, વાનગીનું ઇંગ્લિશ થાય છે ITEM આઇટમ. ટોસ્ટ, TOAST ટોસ્ટ. શીરા જેવી મીઠી વાનગી, જેને જનરલી પીપલ ઇંગ્લિશ કરે છે પુડિંગ, but in real pudding is also another sweet dish. So nowadays people are going to saying pudding different way, like ખીર. શીરા જેવી મીઠી વાનગી જે લિક્વિડ ફોર્મમાં હોય છે, જે રાઈસ અને મિલ્ક સુગરથી બને છે, જેને ખીર કહે છે. તો ખીરને KHIR ખીર તરીકે જ ડાયરેક્ટલી લખી શકાય છે, બટ some people called it pudding also to kheer. So be familiar with that. Soup, SOUP soup. ठीक है, आज के लिए इतना ही. अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे. शुरू से इंग्लिश सीखें. इन सब वीडियोस को देख के आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाइए. अगर हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए,
क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस लगी है जो आपकी नॉलेज को बड़ी इजीली पावरफुल बना सकती है। तो लाइक करिए ज़रूर और सब्सक्राइब करिए हेमल पंड्या द कॉन्फिडेंस क्रिएटर। ठीक है, चलिए।